हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम ट्यूटोरियल। हमने एप्लीकेशन के पीवाईक्यूज सॉल्व करना स्टार्ट किया। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द रेप्लिकेशन पीवाईक्यू सीरीज। तो बिफोर वी स्टार्ट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड whenever the video is out. This is absolutely free from your side, but this will help us grow. The first question is, in E. coli, so DNA polymerase 1 plays an essential role in the replication process. It is not the major polymerase. Right, we know this, हमें पता है. Instead, the enzyme responsible for advancement of replication for is polymerase 3. From the 4 DNA structures, here the structures are given below. Students made several interpretations about the shorter arm being extended by Pol 1 and Pol 3. Which of the interpretation written below is correct? Okay, correct क्या है? We have to identify. Okay, so we have to look for the shorter strands. This, right? Short strands. This is the short strand. Okay. So let's see one by one statement. A will be extended by Pol 3, but not by Pol 1. Okay, A will be extended by no. यहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट है. okay, Pol 3 को चाहिए 3 प्राइम OH, right? So this is incorrect. Neither B nor C will be extended by either Pol 1 or Pol 3. Same here. B में भी यहाँ पे 5 प्राइम OH है, नहीं होगा extend, right? नहीं होगा extend. Here also it is 5 prime phosphate. So no, this will not extend. So this is correct. B and C दोनों भी extend नहीं हो सकते. This is correct statement. Let's take other. C will be extended by both Pol 1 and Pol 3. C will be extended. देखा हमने अभी, यहाँ पे 5 prime phosphate है, नहीं होगा extension. C will be extended only by Pol 1 but not by Pol 3. D will be extended by only Pol 1. No. यहाँ पे 3 प्राइम OH है, यहाँ पे एक्सटेंशन हो सकता है, right? Extension can happen here by polymerase 3. So again this is incorrect statement, right? Option 2 is our answer. Which one of the following statement about DNA replication is incorrect? Okay, during DNA replication, when adjacent bidirectional forks converge, the lagging strand will meet the leading strand of the same template strand. Okay, we will keep this on hold. हम इसे होल्ड पर रखेंगे. Let's take other statements. Mispaired nucleotide at 3 prime OH end of the primer triggers the 3 prime to 5 prime exonucleotic proofreading activity. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? मिसपेयर न्यूक्लियोटाइड है तो उसका रिमूवल होगा बाय द 3 prime to 5 prime exonuclease activity. So I will draw your arrow. This is a 5 prime, this is a 3 prime. Okay, ऐसे डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है, राइट? तो यहाँ पे अगर इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ 3 प्राइम एंड पे तो रिमूवल होगा इसका. तो दिस इज डन बाय 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस. एक्सो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, राइट? प्रूफ रीडिंग से हम बोलते हैं. हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरा कवर किया है, राइट? यू कैन चेक द प्लेलिस्ट, वॉच द वीडियोस. ओके, यू विल फील वेरी इजी, राइट? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इन अ रेप्लिकेशन बबल मूविंग bidirectionally, the same parental DNA strand cannot serve as template for both lagging and leading strand synthesis. Okay,
ये हमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है एंड थर्ड स्टेटमेंट है हमें ड्रॉ करके देखना होगा। ओके, जो फोर्थ स्टेटमेंट है डीएनए रेप्लिकेशन इन्वॉल्व्स आरएनए डीएनए chimeric molecule। यस, ये तो करेक्ट है। वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो अभी लेट्स सी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन फॉर्क। I will erase this and then we will draw your replication fork. Okay, replication fork. This is a fork, right? This is a 3 prime end, 5 prime end, and यहाँ पे 5 prime, 3 prime. Okay, तो हम यहाँ पे एक dotted line we will draw to this. This is a dotted line. Okay, तो ऐसे हम arrows draw करेंगे, right? Then we will draw a complementary strand. तो complementary strand होगा यहाँ पे 5 prime, right? यहाँ पे 3 prime. Okay, यहाँ पे 3 prime. So this will be the leading strand and जो यहाँ पे है ये 3 प्राइम होगा 5 प्राइम। दिस विल बी लैगिंग, दिस विल बी लीडिंग एंड दिस विल बी लैगिंग, राइट। एंड हियर ये लीडिंग होगा। सी ये डायरेक्शन जब मैच हो जाए टूवर्ड्स द 3 प्राइम एंड दैट इज लीडिंग स्टैंड। तो ये लीडिंग स्टैंड होगा, देन हियर ऑफ कोर्स लैगिंग स्टैंड होगा। ओके, लैगिंग स्टैंड। यहाँ पे क्या दिया है, बाय डायरेक्शनल फॉर कवरेज। अगर ये जॉइन हुआ converge, sorry, then the lagging strand will meet the leading strand. Yes, so this is lagging, this is leading. तो कन्वर्ज होने के बाद ये एक दूसरे को मीट करेंगे। तो यस, दिस इज करेक्ट अगेन ऑफ द सेम टेम्पलेट स्टैंड, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन विल बी आंसर, राइट। क्या है थर्ड स्टेटमेंट, इन रेप्लिकेशन बबल मूविंग बाय डायरेक्शनली सेम पैरेंटल डीएनए स्ट्रैंड कैन नॉट सर्व टेम्पलेट फॉर बोथ लैगिंग एंड लीडिंग स्ट्रैंड। तो ये इनकरेक्ट है। व्हाई वी नो, अगर ये ऊपर का स्ट्रैंड टेम्पलेट है तो हाफ साइड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क लैगिंग स्ट्रैंड है एंड लीडिंग स्ट्रैंड है, राइट। सो फॉर द सेम पैरेंटल स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड it serve as a template for lagging as well as leading। दोनों स्ट्रैंड का टेम्पलेट हो सकता है पैरेंटल स्ट्रैंड। इन द डाउन स्ट्रैंड जो नीचे वाला स्ट्रैंड है दैट ऑल्सो वी कैन सी, एक साइड लैगिंग स्ट्रैंड एक साइड लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, होप दिस इज क्लियर। टू एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म। इन द फर्स्ट वन Okazaki fragments means lagging strand were prepared from a replicating cell of E. coli grown in the presence of 32 phosphorus. In the other, the two strands of E. coli chromosomes were separated into H strand and L strand, immobilized onto a nitrocellulose membrane and hybridized with the Okazaki fragment prepared in the first experiment. Which one of the following option correctly describe the observation? Okay, see, two experiments है। पहले ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स प्रिपेयर किए, राइट।
Okazaki fragments are prepared in the first one in the presence of 32 phosphorus. एंड जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है उसमें जो 2 स्ट्रैंड्स है उसका सेपरेशन किया इनटू एच स्ट्रैंड एंड एल स्ट्रैंड, हैवी एंड लाइट. अभी क्या होगा एंड व्हाट दे आर सेइंग, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी किया है विद द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स prepared in the first experiment, right? So check the option. Okazaki fragment will hybridize to only H strand. Okazaki fragment will hybridize to only L strand. How so? Okazaki fragments will hybridize with both H and L strand because the H and L strand have been prepared from different cultures of E. coli. The Okazaki fragment will hybridize to neither. किसी से भी हाइब्रिडाइज नहीं होंगे. नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये डिफरेंट कल्चर्स प्रिपेयर किया है. दिस इज ऑल्सो नॉट मेंशन एनीवेयर इन द क्वेश्चन. नाउ आई विल टेल यू वन थिंग. जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट है दैट इज लैगिंग स्ट्रैंड. ओके, लैगिंग स्ट्रैंड. फिर लैगिंग स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होगा लीडिंग स्ट्रैंड. राइट. एज वेल एज लैगिंग स्ट्रैंड से भी कॉम्प्लीमेंटेशन शो कर सकता है. ओके, so this can bind. See, these are fragments. ऐसे fragments हैं. As well as H and L strand भी लिए है. Suppose this is a Okazaki fragment and दूसरा भी E. coli का genome ही है, right? So this will get bind, whether it be H strand or L strand. So hybridize with the both strand. It may be heavy or it may be light. HL. It will hybridize with both strand. Okay. The figure given below shows the structure of the replication fork. Based on this information, following statements are made. Which one of the following represent correct statement? Okay, correct statement identify करने हैं. Statement A. 1 represents leading strand while 2, 3, 4 represents Okazaki fragment. Yes, so this is a leading strand. So continuous चलता है, that is leading strand. And 2, 3, 4 Okazaki fragment. So A is correct. Right. So B only will get eliminated. Among the Okazaki fragments, synthesis of 4 occurs prior to the synthesis of 3 and 2. ये 2 चाहिए यहाँ पे. Among the Okazaki fragments, synthesis of 1 occurs prior to the synthesis of 3 and 4. So leading strand का arrow है, that you have to understand. Direction ऐसे है. Okay, 5 prime to 3 prime. So first 4 ही बनेगा. Right, 4. So A and B will be answer. Option number 3. Right, option number 3 will be our. Because जो fork है यहाँ से ओपन होगा, राइट. तो फर्स्ट 4 बनेगा, then 3 and then 2. Right, we can see from the direction of leading strand. In the figure above, the replication of DNA beginning from the origin of replication of the chromosome of a newly identified bacterium having a
double-stranded circular DNA genome is shown. Characterization of DNA polymerase responsible for genome replication showed that DNA synthesis occurs in 5' to 3' direction, and it depends on the presence of a primer, as is the case in Escherichia coli. Polarities of the DNA 5' or 3' are as shown. Replication begins at point marked O on the left of the bubble, and both the parent strands were replicated concurrently. The longer arrow inside the bubble shows the leading strand, whereas the shorter arrow marked as ABC show the Okazaki fragment. The model depicts see, तो ये origin का point है. This is located on the left side, right? तो bidirectional नहीं होगा ये. This is unidirectional. Very important. जो bidirectional होता है उसका origin center में होना चाहिए. Okay, for the bidirectional to occur, right? So this is not a bidirectional mode. This is unidirectional, right? The unidirectional mode of replication wherein synthesis of Okazaki fragment marked C occurs prior to those marked A and B. Same like previous question, की डायरेक्शन ऐसी डायरेक्शन है, ऐसे ओपन होगा फॉर. तो जो C है दिस विल occur first, then B and then A. Okay, लीडिंग का डायरेक्शन है, from that we can identify, right? First C, so option number 3 will be correct, 4 will be wrong. इसमें A का synthesis पहले होगा ऐसे दिया है, which is not the case. In the diagram below, the dotted line marks the point of initiation of bidirectional replication. Again, we have to check for the correct statement, right? This is little bit tricky but easy question. On the right side of the dotted line, leading strand synthesis occurs using the upper strand as a template. Okay, so B statement है, on the right side of the dotted line, leading strand synthesis occurs using lower strand as a template. तो leading strand का synthesis कैसे होगा? ठीक, यहाँ पे 3' end है. Okay, यहाँ पे 3' end है, तो इसका जो टेम्पलेट होगा 5' होगा, and here 3'. So this will not be a continuous, leading नहीं होगा, right? Leading नहीं होगा ये. ठीक, नीचे वाला जो स्टैंड है 5' है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस होगा that will be 3'. So this will be continuous. So lower strand template then the leading strand synthesis will occur. तो B यहाँ पे करेक्ट है. Okay, leading strand synthesis occur using the lower strand as a template. So this is correct. A wrong होगा. Okay. Now next statement, ligase deficient mutant would affect the replication of the upper strand on the left side of the dotted line. Ligase deficient mutant would affect the replication of the lower strand on the left side of the dotted line. अभी लेफ्ट साइड का देखना है. लेफ्ट साइड का देखना है. I will erase this. Now what is ligase deficient? Ligase deficient will affect the lagging strand synthesis. Okay, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स का जुड़ना,
राइट, स्टिक होना, that will be done by ligase. अगर ligase deficient है, म्यूटेंट है, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स पर अफेक्ट होगा या लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस पर अफेक्ट होगा. ओके, नाउ वी विल सी लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस कहाँ पे होगी. वी नो दैट बाय डायरेक्शनल है, राइट. तो यहाँ से ओपन होगा एंड यहाँ से ओपन होगा सेंटर से. तो लीडिंग स्ट्रैंड भी यहाँ पे है, दैट वी सॉ ऑन द राइट साइड. अभी लेफ्ट साइड में लैगिंग स्ट्रैंड पर 5 प्राइम है, तो कॉम्प्लीमेंट्री विल बी 3 प्राइम, ऐसे 3 प्राइम होगा, राइट. तो ये तो लीडिंग होगा यहाँ पे 3 प्राइम है, कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम, तो डाउन इसमें लैगिंग स्ट्रैंड होगी, राइट. लैगिंग स्ट्रैंड विल बी देयर. आई होप दिस इज क्लियर. आई विल वंस अगेन एक्सप्लेन. सेंटर से इस साइड एंड दैट साइड ओपन होगा रेप्लिकेशन फॉर, एंड वी नो दैट कंटिन्यूस होना चाहिए, राइट, कंटिन्यूस. सो ये जो एरो है, दिस एरो इन द डायरेक्शन इन विच बाय डायरेक्शनल फॉर्क विल ओपन, दैट रिजेंबल लीडिंग स्ट्रैंड. ये लीडिंग स्ट्रैंड को रिजेंबल करता है, तो जो कंटिन्यूस रेप्लिकेशन ऑन होगा, राइट. देन सपोज दिस इज अ 3 प्राइम, दिस इज अ 5 प्राइम. यहाँ पे जो सिंथेसिस होगी दिस विल बी 5 प्राइम. यहाँ पे जो सिंथेसिस होगी दिस विल बी 3 प्राइम. बट ये जो है दिस वन, ये लीडिंग स्ट्रैंड है. वाई? बिकॉज जैसे जैसे ओपन होगा वैसे इसका सिंथेसिस कंटिन्यूस चलेगा, एंड इन अपर स्ट्रैंड फ्रैगमेंट विल बी फॉर्म, राइट. तो अगेन वी विल कम हियर. ऊपर 5 प्राइम है, कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्राइम है, तो लीडिंग स्ट्रैंड होगा वहाँ पे. एंड नीचे वाला स्ट्रैंड 3 प्राइम है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम है, तो वहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड होगा. ओके, तो a ligase deficient mutant will affect upper strand? No, ये wrong है, ये भी wrong है. D will be correct. Ligase deficient mutant would affect the replication of lower strand on the left side of dotted line. So B and D correct statement, or be wrong. For Escherichia coli chromosomal DNA replication, which one of the following statement is true? DNA polymerase 1 is the main polymerase required for DNA replication. Main polymerase है DNA polymerase 1? No. DNA polymerase 1, so identified originally by Kornberg as the one responsible for replication, is not important for DNA replication process. Important है, right? Important है for the primer removal. Okay, so not important, very extreme statement. The requirement of DNA polymerase 1 is in the context of removal of RNA primer, yes, needed for DNA synthesis, and then fill in the same with the DNA equivalent, राइट. इंपॉर्टेंट है आरएनए प्राइमर को रिमूव करना, मेन फंक्शन है कॉल 1 का, राइट. नेक्स्ट स्टेटमेंट, डीएनए पॉलीमरेज 1 इज द प्राइमरी एंजाइम फॉर एरर प्रोन डीएनए सिंथेसिस इन रिस्पॉन्स टू एसओएस. नो, रॉन्ग है. उसमें डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5 plays the role. During replication, RNase H removes all of the RNA primer except the ribonucleotide directly linked to DNA H. This is because ये हमने देखा है जो RNase H है राइबोन्यूक्लियस, ओनली RNase it can remove. Okay. जो लास्ट का RNA है that is attached to DNA that it cannot remove.
Suppose these are RNA and pink में ये DNA and RNA. तो ये जो RNase H है ऐसे रिमूवल करेगा, ओके, बट ये जो एंड का है that it cannot remove. Why so? Let's take the statement. It can degrade RNA and DNA and from 5' end. No, wrong है. It can only cleave bonds between two ribonucleotides. Yes, correct. It can cleave bonds only between two ribonucleotides. Next statement. It can degrade RNA and DNA from their 3' end. Wrong. Activity of RNase H is inhibited by the presence of duplex containing both strands as DNA. Wrong. Option number 2 correct है. In a human cell line, a large fraction of DNA breaks are repaired by non-homologous end joining. An inhibitor of flap endonuclease will affect recruitment of DNA-dependent kinase, gap trimming, DNA unwinding, pairing of microhomology regions. Okay, suppose that अभी आपको ये एंजाइम पता नहीं है, flap endonuclease. Basically, this is FEN. FEN. We have studied this, right? FEN endonuclease. एंडोन्यूक्लियस है, राइट, एंडोन्यूक्लियस. इसका काम क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करना, राइट. न्यूक्लियोटाइड्स को सपोज डिजिट डीएनए यहाँ पे एंडोन्यूक्लियर मतलब अंदर इट विल कट, राइट, कट करेगा तो यहाँ पे गैप फॉर्मेशन होगा, राइट. इट विल फॉर्म अ गैप. So the option correct will be gap trimming. We know DNA unwinding हेलिकेज करते हैं, राइट. पेयरिंग तो नहीं करेगा बिकॉज इट इज अ न्यूक्लियस. रिक्रूटमेंट ऑफ DNA डिपेंडेंट काइनेज ये भी रॉन्ग है. तो गैप का ट्रिमिंग मतलब गैप को कट करने का काम है एंडोन्यूक्लियस, राइट. इट विल क्रिएट मोर गैप. In eukaryotic replication, priming of DNA synthesis and removal of RNA primer is catalyzed by priming मतलब primer synthesis as well as removal. Okay, removal of RNA primer. So we know that polymerase alpha, right, 3 and 4 eliminate हो जाएंगे. अभी यहाँ पे दिया है PCNA. PCNA तो प्रोसेसिविटी इंक्रीज करते हैं, राइट. जस्ट नाउ हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में FEN, flap endonuclease. This is important for removal of RNA primer. Okay, very important. You have to remember this. So 1 यहाँ पे wrong होगा and 2 will be correct. DNA fall alpha is a primase and FAN 1 will do the removal of RNA primer. Okay, so that's it for this video. I hope this video helps you. If you find it helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming video. Thank you.